3. Today we will study about chapter number 5, Nouns, Naming Words. A noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह के बारे में जब बात होती है, उसके फीलिंग या उसके आइडिया के बारे में, that is called as noun. Okay? Look at the pictures. यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं persons की. The below given words are the names of person. यहाँ पर कुछ words लिखे हुए हैं, वो person के names हैं. They stands for them. Okay? जो उनके नाम लिए जाते हैं. Okay? That we wrote over here. They are all noun. ये सब सारे nouns हैं. First is, यहाँ राजा की पोशाक में कौन है? King. So we are pronouncing him king. K-I-N-G, king. Second is, रानी की पोशाक में queen. Who is he? Baby. Child. Okay? Wrote over here, child. Who is he? Man. Who is he? Woman. Who is he? Boy. Girl. Doctor. Nurse. Identify it. Mahatma Gandhi. Test yourself. A. Pick out the names of persons in the following sentences. The first one has been done for you. यहाँ पर आपको इनमें से नाम सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है. Okay? According to the sentence. First is, my auntie is a writer. मेरी आंटी राइटर हैं. इनमें से आपको वर्ड सिलेक्ट करने हैं. Write auntie and writer. Mark it. Auntie, writer. Second is, her father is a teacher. Father, teacher. Write it. Third is, he is a farmer. He is not a postman. Farmer, postman. First dash is farmer. Second is postman. Okay, now come to the next page. Fourth, he is a soldier and he is not fisherman. Soldier, fisherman. Fifth, my son is a dentist. Son, dentist. Sixth, that policeman is my friend. Policeman, friend. Fifth, write the names of 8 persons. First is king, child, queen, man, woman, boy, girl, doctor. Okay, these all are 8 names of person. Now come to next, places. We can see house. It's written over here according to the place. Okay, house, shop, well, market, railway station, garden, school, police station, church, city. The above words stand for places. ये सारे words जगहों के नाम हैं. They all are nouns. ये सबको nouns कहते हैं. Test yourself. Pick out the names of places in the following sentences. The first one has been done for you. First is, Jaipur is a beautiful city. Mark Jaipur, city. He saw a hut in the forest. Hut, forest. Write over here hut and forest. Third is, there are 6 good schools in the town. Mark it, schools, town. Okay, write it over here. Come to the next. Fourth point. Our house has 2 bathrooms. House, bathrooms. Write it over here. Fifth point.
India is my motherland. Mark India, motherland. Write it over here. Sixth, there are many good hotels in the city. Hotels, city. Write it over here. Come to the next exercise. Write the names of 8 places. 8 places name आपको यहाँ पे लिखने हैं. 8 जगहों के नाम. House, well, garden, church, shop, market, school, city. These are the 8 names of places. Okay? 8 names of places. Come to the next. Fruits. Apple. You can see, identify it. It's mango, banana, orange, guava, pear, grapes, blueberries. Come to the next. Birds. Birds. First is pigeon, peacock, parrot, hen. Come to the next page. यहाँ पर आपने देखा कुछ फ्रूट्स के नाम और कुछ बर्ड्स के नाम, चिड़ियों के नाम. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Owl, crow, duck, vulture. These all are birds. Come to the next. Insects. Insects name: housefly, honeybee, spider, potter wasp, beetle, centipede, caterpillar, dragonfly. Come to the next. Animals: elephant, camel, sheep, horse. Come to the next page. Buffalo, cat, dog, cow. Vegetables: potato, onion, capsicum, cauliflower, turnip, beans, carrot and lemon. These all we read. अभी जो हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के नाम, जो छोटे छोटे पतंगे होते हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो. फिर हमने पढ़ा एनिमल्स के नाम, अलग अलग जानवर. फिर हमने पढ़ा वेजिटेबल्स के नाम, हर प्रकार की सब्जियां जो हम खाते हैं. नाउ टेस्ट योरसेल्फ. A. Write the following. First, the names of 10 animals. यहाँ पर आपको 10 एनिमल्स के नाम बताना है जो अभी तक आपने सीखा. फर्स्ट इज एलिफेंट, सेकेंड इज हॉर्स, थर्ड इज डॉग, फोर्थ इज गोट, फिफ्थ इज कैमल, सिक्स्थ इज buffalo, seventh is cow, eighth is tiger, ninth is sheep, 10th is cat. Come to the next page. Second, the names of 5 insects. आपने जो कीड़े मकोड़ों के नाम पढ़े थे आपको उसके नाम बताने हैं. फर्स्ट, हाउस फ्लाई, सेकेंड, spider, third, caterpillar, fourth, honeybee, fifth, beetle. Third, the names of 5 birds. आपने जो चिड़ियों के नाम पढ़े थे आपको वो बताना है. First, parrot, second, owl, third, vulture, fourth, pigeon, fifth, crow. Fourth is the names of 10 fruits. First is apple. यहाँ पर हमने कुछ फल के नाम पढ़े थे उसके हम नाम लिखेंगे. First is apple, second is mango, third orange, fourth banana, fifth grapes. Fifth point is
द नेम्स ऑफ 10 वेजिटेबल्स. हमने कुछ सब्जियों के नाम पढ़े थे. वी विल राइट ओवर हियर. फर्स्ट इज पोटैटो, सेकेंड कैप्सिकम, थर्ड carrot, fourth onion, fifth turnip, sixth broccoli, seventh lemon, eighth beans, ninth beet, and 10th is tomato. Come to the next. B. Write names of places in the blank where persons work. यहाँ पर आपको places के नाम लिखने हैं इन सब blanks में जहाँ पर छूटा हुआ है. According to this, okay, helping box. जो person जहाँ पे work करते हैं आपको वो चीज़ लिखनी है. First is an actor works in a studio. Write studio. Mark it number 1. B. A clerk works in an office. Mark office. Number 2. C. A cook works in a kitchen. Mark kitchen. Number 3. D. A nurse works in a hospital. Mark hospital. Number 4. E. A sailor works in a ship. Mark ship. Number 5. F. A teacher works in a school. Mark school. Number 6. G. A waiter works in a restaurant. Mark restaurant. Number 7. Come to the next page. Let's recall first. Actor studio में काम करता है. Clerk office में काम करता है. Cook kitchen में काम करता है जो खाना पकाता है. Nurse hospital में काम करती हैं, सबकी सेवा करती हैं. Sailor शिप कहाँ चलती है? सी में चलती है. टीचर स्कूल में वर्क करती हैं. वेटर रेस्टोरेंट में आपको दिखेंगे. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ. सी. नेम्स ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क. यहाँ पर आपको कुछ पर्सन्स के नाम लिखने हैं जो किसी टाइप ऑफ वर्क में एंगेज होते हैं. सपोज आपको यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है. यू हैव टू फिल with the help of this helping box over here. A dash delivers letter. Letter कौन deliver करता है? Postman. Mark A. Postman. B. A dash fills teeth. आपकी teeth को fill कौन करता है? किसका काम है? Dentist. Mark dentist. B. C. A dash makes clothes. आपके clothes कौन बनाता है? Yes, right. That's tailor. Mark C. Tailor. A grocer sells sugar. Sugar कहाँ से आप खरीद के लाते हो? Grocer से, दुकान वाले से. Mark grocer. D. E. A dash attends the sick. Sick को कौन अटेंड करता है? जो बीमार होता है? Nurse. Mark nurse. E. F. An engineer designs machines. Mark engineer. F. मशीन्स को कौन डिजाइन करता है? इंजीनियर. ओके, कम टू द नेक्स्ट. डी. नेम्स ऑफ थिंग्स पर्सन्स यूज. आपको यहाँ पर थिंग्स बतानी है, क्या क्या चीज़ें पर्सन यूज करते हैं.
according to these sentences? These are the words in the helping box. A dash is used to keep money. आप मनी किस में रखते हो? पर्स. मार्क पर्स. A. A dash is used to dry oneself. नहाने के बाद what you use? Towel. So आप towel पे टिक करो. B. C. A dash is used to keep a car in. आप कार कहाँ पे पार्क करते हो? Garage. So mark C. Garage. D. A dash is used to shelter horse. Horse को कहाँ पे रखते हो? Stable. Yes, right. Write it down. Mark it D. E. A dash is used to sit on. बैठते कहाँ पर हो? Yes, right. Chair. So mark it E over here. F. A dash is used to sleep on. Yes, right. हम लोग अपने बेड पे सोते हैं. F. Come to the next. E. Choose the right word from the box to complete the sentences. Name of materials used to make things. यहाँ पर आपको right word choose करना है इन box में से और complete करना है इन sentences को. यहाँ पर जो आपको materials दिए हुए हैं to make things. Okay? A. Blankets are made of. Blankets किसके बनते हैं? Wool. So mark it wool over here. A. B. Books are made of. Books किससे बनती हैं? Mark paper. B. Write it over here. C. Mirrors are made of. Mirrors किसके बनते हैं? Glass. So mark glass over here. C. D. Shoes are made of. Mark leather over here. D. Come to the next page. E. Towels are made of. Towels किसके बनते हैं? Cloth. F. Tires are made of rubber. A waiter works in a restaurant. Okay, mark it over here. In the previous page, mark it. Mark it E. Cloth. F. Rubber. And G. Restaurant. Come to the next. F. Exercise. Names of places where animals live. यहाँ पर आपको places के नाम बताने हैं जहाँ पर animals रहते हैं. Helping box is over here. Use it. A. A bee lives in a. Bee कहाँ रहती है? मधुमक्खी कहाँ रहती है? Hive. Mark it hive. A. B. A bird lives in a. Bird कहाँ रहती है? Nest. Mark it B. C. A cow lives in a shed. Mark it C. Shed. D. A dog lives in a. Yes, right. It's kennel. Mark it D. E. A rabbit lives in a burrow. Mark it E. F. A lion lives in a den. Mark it F. Come to the next. G exercise. Names of things that the animals eat. यहाँ पर आपको animals जो खाते हैं वो बताना है. Okay? By the help of these helping box. इन helping box की मदद से. A. Birds eat. Yes, right. That's insect. Mark it A. B. Cats eat rats. Mark it B. Rats. C. Cow eats
Yes, right. That's grass. Mark it C. Grass. And write it over here. D. Elephants eat. Yes, right. That's sugarcane. Mark it D. Sugarcane. E. Tigers eat. Yes, right. It's flesh. E. Good. That's all. Thank you, class.